Hey guys, welcome to my channel The Engineer Singh. Today's tutorial I will show you the easiest way how you can automatically generate the list of figures for your report or any project you have done after table of contents. So आज का ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कोई भी रिपोर्ट के लिए जिसमें आपके बहुत सारे लिस्ट ऑफ फिगर्स होते हैं उसको मैनुअली ऐड करने के बजाय ऑटोमेटिकली आप कैसे उसको एक ही साथ में जनरेट कर सकते हैं. So without wasting any further time, let's begin the tutorial. So मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपने डेस्कटॉप से अपलोड कर लिया है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं इसमें कैसे लिस्ट ऑफ फिगर्स को ऑटो जनरेट करता हूँ. So the first thing you need to do is you have to identify all the image in your report or projects. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैनुअली हर एक इमेज के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कैप्शन, क्लिक ऑन इट. उसके बाद कॉलम देके आप इसमें आपका जो भी इमेज का टाइटल आपको देना है वो वहाँ लिख दीजिए. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है अर्थ एंड डैम फर्स्ट फिगर के लिए, उसको आप सेंटर में अलाइन करना. इट्स बेटर ऑप्शन, सब इमेजेस सेंटर में अलाइन होते हैं. दैन सेम रिपीट करना है आपको सारे इमेजेस के साथ. जैसे मेरा सेकेंड इमेज आ गया, सेम ऑप्शन इंसर्ट कैप्शन, repeat the same process, insert the title of image and hit the OK button, align it to the center. जैसे मैंने इसमें किया है आपका, ये है होमोजीनियस अर्थ एंड डैम का फिगर. ओके, जस्ट ये ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो गया है. नेक्स्ट हम रिपीट करेंगे फॉर द नेक्स्ट फिगर. सेम प्रोसेस, राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, कॉलन, the title, zone embankment dam, hit OK, align it to the center, and we are ready to go to the next. The next image we have is diaphragm embankment dam. Insert caption, colon, repeat the same process. उसके बाद आपको करना है सेम प्रोसेस, इसको रिपीट करना है. देन यू नीड टू गो टू टेबल ऑफ कंटेंट्स. नेक्स्ट पेज पे आपको एक ब्लैंक पेज ऐड करना है वेयर यू कैन ऑटो जनरेट. आई विल शो यू, फर्स्ट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ सारा. यस, रिपीट द सेम प्रोसेस, गो टू द नेक्स्ट इमेज. यस, सेम, रिपीट द सेम, इंसर्ट कैप्शन, colon, hit OK, align it to the center, move to the next. Insert caption, colon, insert the title of the image, hit OK, align it to the center. Yeah, you can change the title to any other color by selecting the entire and just changing the color. Repeating the same, colon, image title, hit OK, align to the center. That's it. We have another one. Right click, insert caption, colon, title of the image, hit OK, align it to the center. That's it, you're done. Repeat the same, caption, title, hit OK, align it to the center. That's it.
Yes, we are done with all the images. Yeah, we have another 2 images left. So same thing, right click, insert title, hit OK, align it to the center. That's it. Move to the next. Caption, colon, title, hit OK, align it to the center. That's it, we are done. Now just scroll to the top, insert a blank page. If you have developed contents, you can add right next to it. Then after that go to reference, यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा insert table of figures, ऑटोमेटिक सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. जस्ट हिट ओके, योर फिगर्स एंड लिस्ट विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड विथ ऑल द टाइटल्स. दैट्स द बेस्ट थिंग. इट कैन सेव योर लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. अब क्या करना है आपको, यू कैन सेलेक्ट द एंटायर पेज एंड you can customize as per your requirements, like you can change font size, spacings. उसके बाद you can add title like list of figures. That's it. That's how you can professionally generate a list of figure automatically for any report or project you have done. That's it guys, you are done. I hope you like the video. Thanks for watching guys. Join us at Ingenious Sing. If you like the video, hit the like button, and for any questions you can comment down below. Thanks again for watching.